Yes, sir, you can continue. Ramaswamy, shall we start? Sure, sir. All right. Okay. Good morning, everybody. I welcome you all to this institute, arifin.com. So today we are going to discuss yet another week of November. Before beginning, let me tell you, आज का agenda क्या है? The first agenda will be, it will be November 3rd week, and second one we will talk about all the important revolutions. Revolutions in the sense the color revolution. Okay, friends. बहुत सारे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे. ऑलराइट, सो we will take up important issues today. Number one, we'll talk about the third week of November, and number two is the revolutions. All right, so without much delay, let me start this issue. Let us first start with all the important revolutions of the world. Okay, I have seen in different examination ये वाला जो इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है, और बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं. ओके, तो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि ये जो रेवोल्यूशंस वाला चैप्टर है इसको एक बार हम लोग खत्म करते हैं. दैट्स नॉट वेरी बिग वन. ओके, छोटा सा इशू है इसको, ऑल द कलर रेवोल्यूशंस इन इंडिया. ओके फ्रेंड्स, color revolutions in the sense what? These revolutions are associated with different commodities. Some are agricultural commodities. Okay, some are agricultural commodities, and some are basically natural resources. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हम क्या फेस कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ओके, नाउ दिस issue is related to the black power revolution, or simply black revolution. Black revolution, the color as such, and the color says the petroleum. Okay, petroleum is the black, is related to black revolution. Okay, and initiative is not available. So इससे related question simply ऐसा आता है, black revolution is related to which of the following? It's petroleum crude oil. All right, but related to petroleum crude oil, some basic questions may be asked. Okay, you take it as a homework. What are the byproducts? What are the byproducts of petroleum crude oil? That's number one. Okay, next important revolution is blue revolution. Color से ही पता चल रहा है, blue revolution is related to fisheries. There is no ambiguity in it. So blue revolution. Okay, but यहाँ से होमवर्क आपको दे रहा हूँ क्या? What is the meaning of this aquaculture? आप बोलोगे सर हमें पता है, नॉर्मली फ्रॉम द लेमैन पर्सपेक्टिव वी मे बी नोइंग aquaculture क्या है. पानी से रिलेटेड जो सारे प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कमर्शियली रियर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वाकल्चर. बट एक बार आप क्या करना, एक्वाकल्चर को एक टॉपिक के हिसाब से इसको सर्च करो. व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ एक्वाकल्चर? ओके, आई गिव यू एन हिंट. एक्वाकल्चर में यू विल टॉक अबाउट प्लांट्स, इसमें प्लांट्स भी आते हैं. ओके, एंड एनिमल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट. सो व्हाट इज एक्वाकल्चर? नेक्स्ट वन. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? What next? Brown revolution. All right, brown revolution. Brown revolution is related to leather. That's very important. Okay, leather and cocoa. Leather and cocoa. Brown revolution is related to leather and cocoa. All right, next one. Next, gray revolution. It's very important. बार बार ये पूछा गया है, what is the meaning of gray revolution? Gray revolution is related to fertilizer. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस क्वेश्चन. उनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये. ओके, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं? नंबर मोस्टली दे आस्क द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, नाउ यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों. अगर लिखा है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड वाला इशू है तो ही इज नॉर्मन बोरलॉग. पार्डन में यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पर, तो प्लीज डील विद दैट. तो नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, रिमेंबर. ओके, एंड इफ आई आस्क अबाउट हु इज द ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ही इज एम एस स्वामीनाथन. Okay, so you should be very careful while answering this question. Next is white revolution.
Next one is white revolution. White revolution is associated with the commercial trading of milk. Okay, so who is the father of white revolution? He is Verghese Kurian. Verghese Kurian is the father of white revolution. साथ एक और रेवोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ. सिल्वर के साथ देयर इज अ सिल्वर फाइबर. सिल्वर फाइबर दोनों को एक साथ याद रखना है. Silver revolution and silver fiber revolution. So silver fiber revolution is related to silver fiber revolution is related to cotton. Remember, cotton. Okay, it is associated with cotton. है ना. चलो next is pink revolution. Pink revolution is related to two important things. एक तो हो गया drugs and pharmaceuticals. Drugs and pharmaceuticals. Number two is onion. Number two is onions. Okay, pink revolution is associated with drugs and pharmaceuticals and onions. Okay, next, golden revolution. Golden revolution is related to what? Horticulture. Golden revolution, it was in news recently. इसको एक बार. And friends, one more thing, horticulture and honey, ये दोनों चीज के साथ related है green revolution. But horticulture को एक बार होमवर्क के हिसाब से लेना. Search it. Okay, एक बार इसको सर्च करना. What is so important regarding horticulture? All right, that means what is horticulture? एक बार ना इसको विकिपीडिया में आप सर्च कर लेना, ये हॉर्टिकल्चर है क्या. मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसके बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं. नॉट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देयर आर अदर एरियाज एज वेल, है ना. यहाँ से अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिल्वीकल्चर? What is this silviculture? Who can tell me what is this silviculture? Okay. Next one, golden fiber revolution. Golden revolution, if it is horticulture and honey, golden fiber revolution is jute. Remember. Okay. So regarding this jute, jute के uses क्या हैं? What are the uses of this fiber, which we call the golden fiber? Next is red revolution. Red revolution is associated with meat and tomato. है ना. ये देखिए, ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा अगर आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट, येलो रिवोल्यूशन. येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ ऑयल सीड्स. सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, एज आई सेड, इट इज रिलेटेड टू कॉटन. एंड फाइनली राउंड रिवोल्यूशन जो है पटाटो, है ना. तो इस टोटल डॉक्यूमेंट से आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? यू विल फेस क्वेश्चंस लाइक दिस, आइदर कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए में यू विल हैव रिवोल्यूशंस एंड कॉलम बी में यू विल हैव कमोडिटीज. All right, so in this way you have to answer these questions. It's a very important topic. Okay, so this is about the first agenda. Now I'm taking you to the next part of it. Let's talk about the current affairs of the month of November, third week. Okay, I hope आपने पढ़ा होगा तो आंसर करना आपके लिए इजी होगा. I hope so, है ना. तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं. Which city is likely to get very first sandalwood museum? अब when I talk about sandalwood, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट. डू यू नो द बॉटनिकल नेम ऑफ सैंडलवुड? डू यू नो द बॉटनिकल नेम ऑफ सैंडलवुड? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट, सैंडलवुड से रिलेटेड इस सैंडलवुड के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग कौन से स्टेट में मिला है? सैंडलवुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैव गॉट जीआई टैग इन विच स्टेट? अब आप पूछोगे जीआई टैग है क्या? जीआई स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई. ओके, सो जीआई टैग किस स्टेट में सैंडलवुड को और सैंडलवुड प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है इन इंडिया? ऑलराइट, सो व्हाट इज द आंसर? ऑफ कोर्स दिस इज मैसूरू. मैसूरू is likely to have first sandalwood in the country. Okay, next, which state or union territory unveiled project air care to combat rising air pollution? To combat rising air pollution. Okay, now what is that state? Air care, what is that state? It is Haryana. The state is Haryana, which has got air care. Okay, so this is related to Haryana. Now if I ask you, who is the governor of Haryana right now? हरियाणा के अभी जो है वो गवर्नर कौन है?
right? Search it and tell me. Okay, next one. Now, which state government has launched Mukhyamantri Rural Street Vendor Scheme? अब street vendor कौन होते हैं? Street vendors are those who sell their products, along the street. They are a part of the unorganized sector, right? Unorganized sector के ये होते हैं. Okay, that comprises the largest share of labor force in our country on unorganized workers. On the line of प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना. ओके, तो ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के पैरेलली एक मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना लॉन्च की है. ओके, अब ऑप्शन है ये आपके सामने, राइट? उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश एंड झारखंड. अब इसमें से आंसर एक है. विच इज दैट स्टेट? विच इज दैट स्टेट? इट इज मध्य प्रदेश. द state is Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh government has launched recently Mukhyamantri Rural Street Vendor Scheme. Okay. Yes. सत्यदेव नारायण आर्य हो गया हरियाणा के गवर्नर. इतिश्री, थैंक यू फॉर द आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट वन. तो अच्छा, रिलेटेड टू मध्य प्रदेश. नाउ फ्रेंड्स, डू यू नो वन थिंग विच इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? विच इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? एक बार सर्च करके मुझे बताइए. विच इज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? ऑलराइट, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम December 12 to 18, the Indian Railways, that is IRCTC, Indian Railways Catering and Tourism Corporation will organize Bharat Darshan Dakshin Bharat. Bharat Darshan Dakshin Bharat यात्रा from Hyderabad to which city? तो ये भारत दर्शन स्कीम तो ऑलरेडी उनकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. तो अभी हैदराबाद से कौन सी सिटी के तरफ ये जाएगी ये ट्रेन? Which was that city? It will be Bharat Darshan Dakshin Bharat Yatra. This will be from Hyderabad to which city? Right. The question needs to be a bit rectified. यहाँ पर ये पूछा है हैदराबाद एंड विच सिटी. ये एक्चुअली टू नहीं होगा, हैदराबाद एंड विच सिटी. तो हैदराबाद एंड सिकंदराबाद से ये जो ट्रेन है ये शुरू होगी. ऑलराइट, द आंसर इज सिकंदराबाद, है ना? हाउ मच एड हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू आसियान कोविड-19 रेस्पॉन्स फंड एंड एज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी एट 17th आसियान इंडिया समिट. तो ये जो है ये स्कीम, ये स्कीम जो है ये कितने पैसा देगी? गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड हाउ मच अमाउंट टू आसियान कोविड-19 रेस्पॉन्स फंड? हाउ मच इज इट? इट इज $1 million. हाउ मच इज इट? इट इज $1 million. ओके, $1 million देने की घोषणा की गई है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. In November 2020, Fitch Solutions revised its estimate for India's fiscal deficit to how much percent of GDP from for 2021 from 8% projected earlier. Okay. अब the thing is that यहाँ से is from this question, what are the things that you should know? Number one, ये Fitch जो यहाँ पर लिखा है, what is Fitch? You see, in November 2020, Fitch Solutions. Okay, Fitch is a international credit ratings agency. Fitch is a international credit rating agency. Remember. Okay, so ये question number 1 यहाँ से निकल के आता है. Number 2, what is the meaning of fiscal deficit? Number 2, fiscal deficit क्या होता है? What is fiscal deficit? How many of you know what is fiscal deficit? Fiscal deficit means what? When the government's total income, एक गवर्नमेंट का टोटल इनकम को अगर टोटल एक्सपेंडिचर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर आंसर नेगेटिव आता है ना, सपोज गवर्नमेंट अर्न 100 रुपीज एंड गवर्नमेंट स्पेंट 150 रुपीज, देन what is the answer then? -50. दैट मीन्स 50 रुपए कहीं से उसने लोन किया हुआ है.
Alright, if it is the situation, then this 50 rupees will be the fiscal deficit of the government. I hope it is clear with you. है ना, इनकम से एक्सपेंडिचर को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. ओके, so then we will get either there would be a surplus or a deficit. Fiscal deficit means total in expenditure, total income minus total expenditure. तो गवर्नमेंट की अभी क्या है, फिजिकल डेफिसिट होगी कितनी, टू व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी. ओके, एंड आई होप यू मे बी नोइंग जीडीपी. जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना. तो अभी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्ट को कितने परसेंट को रिड्यूस किया हुआ है इन द सेंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट. ओके, तो हाउ मच इज इट, देयर आर 4 ऑप्शंस. अब इसमें से आंसर कौन सा निकल के आता है, देखो. व्हाट इज आंसर हियर, इसका आंसर है डेफिसिट. हाँ, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, तीसरी डेफिसिट का मतलब होता है कम पड़ जाना. राइट, आपके पास जितना पैसा है उससे अगर आपका आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा ज्यादा हो जाता है. इफ यू अर्न लेस, इफ यू अर्न ₹100 और अगर आप स्पेंड करते हो ₹150, तो अगर इसमें से हम लोग देखें सब्ट्रैक्ट करने से 50 रुपीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव. मतलब आपने कहीं से ये पैसा लोन लाया है, बोरो किया है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट. अगर वहीं पर यू अर्न ₹100 एंड यू स्पेंड ओनली ₹50, देन आपके पॉकेट में ₹50 सरप्लस बच जाएंगे. दिस इज कॉल्ड सरप्लस. आई होप इट इज क्लियर, है ना. ये हो गया डेफिसिट, दिस इज डेफिसिट, एंड ये हो गया सरप्लस, है ना. यस, दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉस. ओके, वी डू नॉट से इट लॉस, लेकिन इसको डेफिसिट ही बोलते हैं. तो इनकम के मुकाबले अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा ज्यादा हो जाता है, और गवर्नमेंट के केस में तो ऐसा ही होता है ना. हर साल कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटी हमको गिफ्ट के हिसाब से मिलती है. तो फॉर दैट गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मोर. गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर एक चीज मैं और बताता हूँ. गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं. ऑलराइट, क्या क्या. नंबर 1 इज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर. देखो ये ना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में इकोनॉमी के साइड से. प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक हो गया नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, सपोज द गवर्नमेंट दिस ईयर इन द बजट 2020-2021, एक साल के बजट में उसने डिसाइड किया क्या, वी विल हैव 5 एम्स. हम लोग 5 एम्स बनाएंगे इस साल. वी विल कंस्ट्रक्ट सम आईआईटीज दिस ईयर. हम लोग डिफेंस में इतना पैसा देंगे. तो दीज आर ऑल द प्लान्ड एक्सपेंडिचर. एजुकेशन में इतना, हेल्थ में इतना. बट एट द मिड ईयर यू सी, सपोज कोविड-19 हो गया. अब ये कोविड आएगा करके ऐसे तो गवर्नमेंट को सपना नहीं आया था ना. तो दिस इज अनफोर्सिन सिचुएशन. देयर इज ए फ्लड, लार्ज स्केल फ्लड हो गया चारों तरफ. देयर इज ए साइक्लोन इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री. सो दीज आर एक्चुअली नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. तो उस हेड में भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, है ना. सो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. ओके, हैव ए क्लियर आइडिया रिगार्डिंग दैट. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. In November 2020, Fitch Solutions revised its estimate for India's fiscal deficit to what percent of GDP? It is basically 7.8% of GDP. Remember. ओके, इकोनॉमी वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट फोकस करके अगर एक बार पढ़ेंगे ना तो थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू. नाउ एक आफ्टर फिच विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट अनदर रेटिंग एजेंसी. दिस इज अनदर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, मूडीज. Okay, so Moody's, the rating agency Moody's Investor Service forecasted how much percent of contraction of India's GDP. तो इंडिया का जो ग्रोथ है उसको कितने परसेंट से उसने कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रेडिक्ट किया है ना. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी द आंसर. अकॉर्डिंग टू Moody's the answer is 8.9%. Remember, this prediction is 8.9%, means Indian GDP will grow at minus 8.9%. Okay, so there is a large scale slowdown in the market. So this is a likely situation, huh? In November 2020, India and the Maldives. Okay, Maldives का कैपिटल हो जाता है माले. इंडिया एंड मालदीव्स, एंड साइड बाय साइड मुझे थोड़ा बताइए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स राइट नाउ. एक बार सर्च करके मुझे बताइए.
India and Maldives signed 4 agreements in which of the which one, in which one was a connectivity project, which how much grant? Connectivity project in the sense sea connectivity, है ना, सी एंड एयर कनेक्टिविटी। तो कितने रुपए का ग्रांट उसको दिया हुआ है, इट इज 100 million US डॉलर। हाउ मच इज इट? 100 million US डॉलर। यहाँ से मुझे एक टर्म आपको होमवर्क के हिसाब से देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट? ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ओके, व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट? सर्च इट एंड टेल मी। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड 15th ईस्ट एशिया समिट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इट वाज हेल्ड वर्चुअली दो, लेकिन सम वन कंट्री वाज द होस्ट। तो ये होस्ट कंट्री कौन सी थी ईस्ट एशिया समिट की? यस, इट इज यू आर करेक्ट, इट इज इब्राहिम मोहम्मद सोली। याद रखिएगा इसको। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? इवन दो इब्राहिम मोहम्मद सोली, यस प्रियंका करेक्ट। इब्राहिम मोहम्मद सोली इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ओके, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, है ना। तो कीप दोज थिंग्स इन माइंड। एंड इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है क्या? एक न्यूज़पेपर। जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ेगा उसको ये चीजें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगी, है ना। इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, हाँ। तो 15th ईस्ट एशिया समिट, ये ईस्ट एशिया समिट कहाँ पर हुई थी? वेयर वाज ईस्ट एशिया समिट हेल्ड? वर्चुअली ऑफ कोर्स, ये तो इंटरनेट में ही होस्ट हुआ था, लेकिन हु वाज द होस्ट कंट्री? इट वाज वियतनाम। ओके, वियतनाम होस्टेड दिस ईस्ट एशिया समिट। अब यहाँ से मैं आपको दो होमवर्क दे रहा हूँ। नंबर वन, ईस्ट एशिया समिट जो है इसका बैकग्राउंड, ओके, सर्च अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ ईस्ट एशिया समिट, व्हाट इज, व्हेन इट स्टार्टेड, व्हाट वाज द पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, एंड फाइनली ये जो कंट्रीज यहाँ पर है ना, यू कैन सी, वन इज कंबोडिया, वन इज सिंगापुर, वन इज वियतनाम, वन इज मलेशिया। ओके, दीज 4 कंट्रीज आर योर होमवर्क। ये भी आपके होमवर्क हैं, सर्च अबाउट दिस कंट्रीज। ओके, तो जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक बार आप इसको करिए, यू विल गेट द बेनिफिट। हाँ, नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द 8th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्टेरियल मीटिंग वर्चुअली? राइट। तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ब्रिक्स का ये जो समिट था, ये किसने होस्ट किया था? नंबर वन, फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रिक्स, हर बार ये पूछते हैं वो लोग, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? राइट। अब इसमें ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, और सी स्टैंड फॉर चाइना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब आंसर क्या हो जाता है? ये जो ब्रिक्स की ये जो समिट हुई थी, ये हुई थी रशिया में। इन द सेंस रशिया होस्टेड इट। ओके, इट वाज होस्टेड ऑन द इंटरनेट, बट रशिया वाज द होस्ट कंट्री। Okay, but remember, it was not the BRICS formal summit. It was a BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial Meeting. Okay, BRICS का formal summit अलग होता है. Next one. Which city is named as the World Book Capital for the year 2022? Friends, remember, this is going to be a game-changing question. World Book Capital. Every year, a particular city is named as book capital, right? So that privilege is given to which country this time? This country is, अब ये कहाँ पर है? Guadalajara. This place is Guadalajara. Guadalajara is in Mexico. Remember, Guadalajara is the answer, right? Option D. So it is in Mexico, which was named as World Book Capital for the year 2022 by Director General of the UNESCO. UNESCO के Director General कौन है? Audrey Azoulay. हाँ, so it was early, now. Okay, this is the World Book Capital for 2022. Okay, I tell you which is the book capital for 2020 and 21. राइट, 2020 के लिए कौन सा है? 2020 के लिए है कुआलालंपुर। देखो स्क्रीन को अच्छे से देखना अभी। हाँ, ये कुआलालंपुर जो है, कुआलालंपुर इज फॉर 2020। मलेशिया, टिबिलिसी इज फॉर 2021।
2021, and Gudaljara, this place, Gudaljara is for 2022. So sequentially अगर हम देखें, World Book Capital for 2020 is Kuala Lumpur. For 2021 it is Tbilisi, and for 2022 it is Guadalajara. Okay, so these are all three places which will be the book capitals for 3 consecutive years. So ये बड़ा important question है, इसको mindfully याद रखिएगा. Next one, which foreign bank Indian branch is going to set up a new banking platform? Okay, new in the sense a innovative banking platform to reach out to its customers. Options are SBM Bank, HSBC, Barclays, Standard Chartered. Okay, see all of them are foreign banks. Remember, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? SBM Bank. Okay, so SBM Bank is a subsidiary of SBM Bank is a SBM Bank SBM Bank is a subsidiary of, remember, SBM Bank is a subsidiary of State Bank of Mauritius. Okay, remember, SBM Bank is a subsidiary of State Bank of Mauritius. Okay, so this is the answer, SBM Bank. All right, तो बैंक का क्वेश्चन है तो आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये नहीं आएगा करके. Okay, it's a potential question. All right, next one. Now, which company is going to acquire the shares of Post Bank Systems AG, the technology service unit of Frankfurt-based Deutsche Bank AG, and absorb its 1,500 employees? So it is a restructuring of this system. So what will be the answer? You have 4 options: Wipro, Tech Mahindra. We have Wipro, Tech Mahindra, and TCS and ITC Limited. According to you, what will be the answer? What will be the answer? It is TCS. The answer is TCS. Okay, the answer is TCS. All right, now which one? Which team won the Geo Women's T20 Challenge title? Which team won the Geo Women's T20 Challenge title? 4 options are there. अब आंसर क्या हो जाता है? The answer is Trailblazers. The answer is Trailblazers. Okay, the answer is Trailblazers. Okay, this is that team. Next one. Now, how much amount was released by NABARD to district cooperative banks in Karnataka under special liquidity facility? Special liquidity facility for farmers in distress due to COVID-19. Okay, so it is a farm loan scheme. तो अब ये कितने रुपए का लॉन्च दिया हुआ है? It is basically 1700 crore rupees. 1700 crore. Now friends, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको. This NABARD, हर बार they ask the full form of this agency. NABARD is a development bank. Remember, it does not deal with common people. So NABARD, ये जो बैंक है, this bank, इसका full form क्या है? और when it was established, in which year it was established? So ये 2 क्वेश्चन बेसिकली पूछते हैं वो लोग. Next one, what is the total outlay for the revamped viability gap funding VGF scheme for encouraging investment in social as well as economic infrastructure project? Okay, so now what is this amount? They're asking about a particular fact. So what is the amount? It is 8,100 crore rupees. That is 8,100 crore rupees is the answer. Option C is the correct answer here. All right. Finance Minister Nirmala Sitharaman asked banks to ensure all accounts are Aadhaar seeded and linked with permanent account number. Okay. By which date? That means, according to the Finance Minister of India, all the bank accounts should be linked with Aadhaar and should be linked with their PAN numbers. By which date?
Okay, which are two important financial documents. So this has to be done by which date? What is the time period? It is March 31st, 2021. The date is March 31st, 2021. Equally important question. ये भी आने के chances उतने ही हैं, right? इससे related एक और था, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के हिसाब से देता हूँ, हॉलमार्क. हर गोल्ड ज्वेलरी में मोस्टली एक हॉलमार्क होता है. दिस इज रिलेटेड टू टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड. ओके, so hallmarking will be mandatory by which date? Hallmarking will be mandatory by which date? Okay, तो ये डेट थोड़ा एक बार खोज लीजिएगा. नेक्स्ट वन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर incentive schemes MEIS for exports during 2019-2020? How much is it? How much is it? It's also a factual question. Okay, it's option A. You see, it's option A. Here is the answer: 39,097 crore rupees. Okay, next one. You see this one, Competition Commission of India. Okay, remember what is Competition Commission of India? It is a market regulator for maintaining competition, maintaining a fair environment of competition in India. It approved how much percent stake to be picked up by Google in Mukesh Ambani's Jio. Okay, Google is wanting to take up some share percentage in Jio for 33,000 crore rupees. So it amounts to how much percent? वही पूछ रहा है. Okay, ये जो इतने पैसे हैं, it amounts to how much percent of Jio? It is 7.73%. पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा. Okay, पेपर पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर, and that too an English newspaper. All right, so it is 7.73%. So this much percent would be the share of that Google will acquire in Jio. Next one, Nitish Kumar took charge as the Chief Minister of Bihar for which straight term? Yes, it is a special question. Nitish Kumar became the Chief Minister of Bihar. That's correct. लेकिन ये कौन सा term है? The same question. The answer is fifth. Okay, it is the fifth term of Nitish Kumar. Okay, the answer is same. The question is same for US president as well. US के president जो हैं, Joe Biden, he is which number president? Joe Biden is which number president of USA? Okay, so you should be ready with the answers. Next one, Union government extended the tenure of Sanjay Kumar Mishra as the director of which of the following by 1 year? तो इनका extension हुआ है 10 year का, right? So he is the head of which agency right now? Sanjay Kumar Mishra, he is the agency of ED. In recent times, you must have heard about this ED, Enforcement Directorate. So he has given an extension as the head of ED, Enforcement Directorate. Okay, so friends, can you take this as a homework? Take it as a homework, right? Search it. What is Enforcement Directorate, when it was formed, whether it is a statutory body or a constitutional body. Okay, likewise, where did PM unveil the Statue of Peace through video conferencing, that for marking 151st birth anniversary of Jain monk Acharya Sri Vijay Vallabh Sureshwar Ji Maharaj. तो स्टैच्यू ऑफ पीस ये कहाँ पर लॉन्च? वी मस्ट बी नोइंग अबाउट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. तो स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है? ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट concentration of Jain population is in Rajasthan. Okay, so of course that is the answer, Rajasthan. That's the correct answer. All right, now where is world's first library for children on a tram? On a tram launched on Children's Day. Okay, world's first library for children on tram. तो ट्राम सर्विस तो इंडिया में मेरे ख्याल से एक ही जगह पे अभी ऑपरेटेड है. ऑलराइट, सो दैट प्लेस इज कोलकाता. ओके, भुवनेश्वर में तो ट्राम सर्विस है नहीं. एंड इन एनी अदर पार्ट लाइक भोपाल, पुणे, आई डोंट थिंक देयर इज अ ट्राम सर्विस. तो ट्राम सर्विस इज इन कोलकाता. सो द आंसर इज कोलकाता. आप थोड़ा जनरल इंटेलिजेंस लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा. ऑलराइट, ट्राम सर्विस. नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर launched सांस. ये सांस क्या है? A 3-month marketing campaign to reduce childhood death from which disease? अब कौन से डिजीज के अगेंस्ट में सांस लॉन्च किया हुआ है? सांस का मीन्स होता है इंग्लिश में ब्रेथ. तो इसके लिए ये किस डिजीज के लिए?
लॉन्च किया हुआ है, द डिजीज इज निमोनिया, द डिजीज इज निमोनिया। ओके, तो SARS has been launched for eradication or for curing pneumonia, spreading awareness regarding pneumonia. 2020 physics Nobel laureate Professor Andrea Ghez, who worked closely with Indian astronomers on the design of a back-end instrument and possible science prospects of the 30-meter telescope project, hails from which country? ये जो TMT है, TMT प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे ये नोबेल लॉरेट, अब ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? That is the question what is asking here. He belongs from US. He is a US astronaut. Okay, so he belongs from USA, United States, which was in news recently. According to RBI, India's GDP is likely to contract by how much percent? Again, a very special question. This may be a potential question. RBI के हिसाब से जुलाई सितंबर पीरियड में इंडिया की जीडीपी कितने परसेंट को स्क्वीज हो गई? So it is how much percent? It is 8.6%. It is 8.6%. Okay. According to consumer price index, देखो ये consumer price index क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना inflation. Let me give you another example. Suppose you want to measure the height of a person. एक इंसान की height हम लोग measure करेंगे. So आपको you can measure it in terms of feet or centimeters, right? Similarly, if you want to measure inflation, then how can you measure it? Right? One device is CPI, Consumer Price Index. Number two, second device is Producer Price Index. And number three, the third device is Wholesale Price Index. Okay, so these are three instruments by which inflation can be measured in any country. Okay, so different countries they take different parameters. Next one. So इसके हिसाब से अभी आंसर क्या हो जाता है? According to it, what will be? According to Consumer Price Index data released by Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation stood at what percent? Okay, so it was 7.61%. बड़ा simple सा question है, you should answer it. 7.61%. Who won the Turkish Grand Prix award? Turkish Grand Prix. So who won it? It was Lewis Hamilton. अब Grand Prix में तो कुछ selected नाम ही है, right? Either you will have Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton. So what is the answer? These are competing people. Either ये या तो वो ऐसे ही होते हैं ना. So it is Lewis Hamilton who won it, Turkish Grand Prix award. Next, Vijayanagara has become the 31st district of which state? I hope you may be knowing it. Vijayanagar Empire आपने पढ़ा होगा. Vijayanagar Empire. Okay, it is still a part of. It is not present day. It's not there. Okay, but Vijayanagar has become the 31st district of Karnataka. Okay, 31st district of Karnataka. Which state? अच्छा, अगर आप ले सकते हो तो you can take it as a homework. History का एक homework ले लीजिए. Vijayanagar Empire. Take it as a homework. Alright. Which state or UT has rolled out a free breakfast scheme for school students named after DMK President K. M. Karunanidhi for the government and government aided schools? Okay, so free breakfast scheme, तो ये you may be knowing it. Okay, तो ये हो गया Pondicherry. This breakfast scheme is for the Union Territory of Pondicherry, और present day we call it Puducherry, है ना? पुडुचेरी. अगर यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, which is called मिनी फ्रांस और which is called यूरोप ऑफ इंडिया, यूरोप ऑफ इंडिया, ये दो क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 इज मिनी फ्रांस, क्वेश्चन नंबर 2 इज यूरोप ऑफ इंडिया. ऑलराइट, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर एक बार आप दीजिएगा, है ना? नेक्स्ट वन. नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू फास्ट ट्रैक द इरेडिकेशन ऑफ सर्विकल कैंसर. इस डिजीज को इरेडिकेट करने का प्लान है एंड रिड्यूस डेथ ड्यू टू इट बाय विच ईयर? ओके, सो व्हाट इज द टारगेट ईयर टू reduce the
severity of this cervical cancer, it is by 2050. Okay, as it is a deadly disease and the prevalence is wider, so the target has been taken to 2050. By 2050, WHO has targeted to eradicate this disease. Okay, cervical cancer. Next, HDFC Bank, along with which bank has put in the red flag, has been put in the red flag list, a system used for monitoring foreign portfolio investments. Okay, so HDFC and which bank has been put under that list, right? The answer is Indus Ind Bank. ये कौन सा बैंक है? Indus Ind Bank. All right. Next one. Which bank has launched मुंह बंद रखो campaign to increase the awareness about on cyber frauds and preventing them? है ना? इसका मतलब क्या है? That means not to disclose any bank related information, right? That means somebody is asking you to provide your bank details or any other documents, so you should be very vigilant. आप अपने बैंक के details या तो पिन नंबर वगैरह सबको ना दें. For that, this bank has launched मुंह बंद रखो initiative. So it is just a awareness drive. Okay, so this bank is HDFC Bank. This is HDFC Bank. Okay, HDFC Bank has launched मुंह बंद रखो drive. Very important. Reserve Bank of India, in its new nowcast, announced that for the first time in history, India's economy has entered a technical recession. Right? We might have heard about recession, the economical term. So technical recession in first half of 2021. It forecasted that what % contraction of GDP for July September. Okay. तो ये फिर से again the same type of question. The contraction will be 8.6%. अभी हमने डिस्कस किया था. The contraction was 8.6%. Now, Department of Investment and Public Asset Management, DIPAM. अब यही क्वेश्चन हो सकता है. देखो, DIPAM is an acronym, so they can ask you what is the full form of P or D, all right, or something like that. And signed with which bank to get advisory services for asset monetization. है ना? ये asset monetization क्या होता है? Suppose you have a gold ring. Gold ring is an asset, है ना? This is an asset. तो अगर आप इसको मनी में कन्वर्ट कर देते हो, अगर आप इसको बेच देते हो, right? So this is called asset monetization. That means converting some asset into liquid money or something like that. Okay. So asset monetization. अब ये बैंक कौन सा है? What is the bank here? It is the World Bank. Okay. So DIPAM has signed an agreement with the World Bank. All right. The answer is World Bank. All right. So friends, with this, we have come to the end of this session today. So thank you so much for your patience hearing and thank you so much for your patience participation. जो homework मैंने आज आपको दिया, वो homework आप करिएगा. You will see a gradual increase in your knowledge base. That is what my objective and our objective is. All right. So for the time being, let's wind up the class. Thanks a lot. We will meet in the next week with another important topic, that is November 4th week, and I will take up a special topic as well. और जो सारे हमारे classroom students हैं, we will have the history class tomorrow, and on Thursday we will have the geography class. All right. So for the time being, let's wind up the class. Thanks a lot. Enjoy the day. Bye bye all.